that is a derivative of definition of derivative is this was the definition of a derivative. We have already studied. Okay, if there are 2 points, neighborhood point, and or we may say that you may also say that if there is a Sx and there is x1, then xf minus xi or x naught that is also defined as derivative. I have already explained that if the change in neighborhood means there is a small the next point is approach to the first point, then that will be defined as a derivative. Yes, we have discussed it many and many times. Okay, or you may say like this too, that derivative in the form of alpha. If x is not a variable, if we consider the general definition of derivative that we have already discussed, that limit delta alpha approach to 0, then f alpha plus delta alpha minus f alpha delta alpha approach to 0. So these are the definition of the derivative, and I have already explained the derivative mean the small variation approach to if the something is approaching to not approaching to 0, that is mean if the variation, if the difference between two coordinate is approach to 0, difference mean if 2 points are very very close to each other, mean they are neighborhood like a closed circle, as I have already explained the definition of neighborhood in a previous lectures. So the variation in a neighborhood or a infinitesimal close point, or if the variation in neighborhood point, okay, are limited if the something is approached to 0, or if the something is approached to some point, the change in a function at their neighborhood is defined as a derivative. Okay, and it is also defined as a localization. Okay, so that is the definition. So it means if two functions are, if there is a two functions fx and dx, they are fx and gx, xf and x naught, initial and final value. Okay, okay. If delta x approach to 0, x approach to 0. Okay, sorry, not x. If कौन सा ये xf है, xf mean final point, x naught is initial point. If final and initial point are approach to each other, okay, their difference is near to 0, mean as final point approach to, I have already explained in the geometrical representation, if this is xf, if this is x naught, if f approach to x naught, mean if it come to here, approach to 0. Okay, but in according to neighborhood, that will be a definition, that will be that mean in two dimension they make a line. So if that approach to 0, so that tangent line will be defined as derivative. So according to definition derivative 2, if x approach to 0 and these are the function that are actually the replacing with the, that is equal to limit x approach to 0 fx limit x approach to 0, that is gx. Okay, or you may say that may be right in the limit delta x limit s approach to 0 fx x
divided by limit x approach to 0 gx divided by gx. They may write in this form. Yes? What is this? This is derivative. And even if this form is not true, we may also apply, actually x is also approaching to 0. Okay. So that may be equal to first derivative, second derivative and third derivative. You may take a derivative up till कि हमारे पास अगर लिमिट आ रही है तो हम इसके डेरिवेटिव से चेंज कर सकते हैं. So that is actually the L'Hopital rule. हाँ जी. Okay. Okay, this is the simple logic for existence of this. And what is the meaning? हम कुछ exercise करेंगे तो ये ज़्यादा clear हो जाए. Okay. As I have already explained in my different lectures, infinity is I have already defined, infinity is defined, and it depend upon the reference, like zero number. Infinity is defined as a 0, okay, and it depends upon the reference for which it is using. The what is the definition of infinity? It is mean the beyond the limit, beyond the your power, beyond the your limit, okay. Okay, reference mean हम क्या चीज कंसिडर कर रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट पे. लिमिट नहीं सॉरी इन्फिनिटी. ठीक है, मैं अभी एग्जांपल भी देता हूं. बियॉन्ड द पावर और बियॉन्ड द लिमिट ऑफ सम रेफरेंस. जो रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं उसके बियॉन्ड जब भी कोई चीज होगी वो उसके लिए इंफिनिटी होगी. फॉर एग्जांपल, इफ माय वॉइस इज लिमिटेड टू दिस रूम, इट मीन एवरीथिंग बियॉन्ड दिस रूम इज इनफिनाइट फॉर my voice. Similarly, sin theta maximum and minimum value is remain between +1 and -1. So +2 and -2 is the infinite for sin theta. बियॉन्ड दी मतलब वो आप जो भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसकी लिमिट से बाहर जो चीज होगी दैट विल बी डिफाइन एज अ इन्फिनिटी. फॉर एग्जांपल मैंने बताया, फॉर एग्जांपल माय वॉइस इज लिमिटेड टू माय रूम, सो outside the room area is infinity for my voice. So outside the room everything will be outside the area from my room will be defined as infinite for my voice. हाँ, that will be defined as infinite. जहां वो चीज नहीं पहुंच सकती, मेरी लिमिट से पावर से जो चीज ज्यादा है नहीं, that depend upon कि मेरी आवाज कहां तक जा सकती है. हम रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड है कि आप किस चीज के लिए लिमिट लें. फॉर लेवलिनियर माइक this will be this distance 2 foot will be beyond the 2 foot will be defined as a infinity. Okay. For
This is all the point between 1 and please. So if रियल नंबर से हम -1 से लेके +1 तक तमाम पॉइंट, या मैंने वो करली ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि दैट आर नॉट पर्टिकुलर पॉइंट, बट ऑल पॉइंट फ्रॉम -1 टू +1 अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो दैट विल बी डिफाइन इन्फिनिटी फॉर साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू वहां तक कभी अप्रोच नहीं कर सकती. साइन वैल्यू हम वी हैव ऑलरेडी प्रूव इन दी अवर एक्सरसाइज इन द प्रीवियस एक्सरसाइज दैट साइन मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज अ +1 एंड बियॉन्ड ऑल दीज वैल्यूज एक्सेप्ट मतलब इसके इन -1 से +1 के दरमियान जितनी वैल्यू है वो दैट विल बी एग्जिस्ट, बट बियॉन्ड ऑल दीज वैल्यू विल बी नॉट एग्जिस्ट. सो दैट्स मीन दैट विल बी इन्फिनिटी फॉर साइन थीटा. सो इन्फिनिटी this is definite beyond. acha infinity is defined, yes, equal na. Infinity is defined, that is equal mean infinity is which is beyond the limit or beyond the power. Okay, so that is the definition of it. So infinity is defined, but what is not defined, but what are undefined? Undefined. If infinity is defined and 0 is defined, what is undefined? Undefined things are 0 divided by 0, infinity divided by infinity, infinity minus infinity, infinity power infinity, 0 power 0, and such on. These are the undefined up till yet. Okay. 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 If in your equation is equal to 0 by 0 or infinity by infinity or infinity minus infinity, like such type of all identity will be undefined in mathematics as well as in physics. But if there is a limit is applied, that will not undefined, because that will be not 0 by 0. Actually, they are not 0 because their neighborhood will be defined. There is a cutoff. At exact point, there will be cutoff. But when we apply the limit doesn't mean that is exactly. Limit is different thing. For example, if I say that the sine, for example, if I say that sine x divided by x, limit x equal to 0, if x equal to 0, what will be the answer? Sine 0 is 0, because now this is exactly the 0 point and this is a 0 point. So that means that is 0 by 0 undefined. It is very important to remember. But limit is not an exact point. Limit means the neighborhood point. That is a derivative. I have already explained. Okay, that is not exactly. उस exact point पे तो वो undefined होगा. हम physics में बाज का ऐसे करते हैं. For example, मैं एक example देता हूँ. In the case of, for example, in the case of tan theta, we have studied that will be infinite only for a one point, infinite to infinite. अगर वहां से हम उसके pieces कर दें, छोटे छोटे, they can be bent, तो that become a, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर ब्रांच कट या ब्रांच लाइन आ रही है, that may be removed. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला कम्प्लेक्स नंबर्स में. अगर आप लोग मतलब जिससे भी कम्प्लेक्स पढ़ते हो, अगर वो पढ़ाता है तो ये हम मतलब if this something is not exactly equal, like for example, इधर ले लेते, ये देखना लिमिट में आ रहा है, लाइन आ रही है, आ रहा है ना, बस इतना आना चाहिए. ओके, फॉर एक तो ये एग्जांपल होगी, इफ साइन x इक्वल टू 0 देन दैट विल बी नॉट अ 1, दैट विल बी अ अनडिफाइंड. क्या
Yes, at exact point that will be undefined. But neighborhood mean the derivative that is closest point, that is not exactly something is a possible. जैसे tan थीटा में हमने देखा, मैं एग्जांपल दे देता हूं. फॉर एग्जांपल tan थीटा theta is function. We have already defined tan theta is function. Theta is a function yes, what was the domain value? रेंज तो कोई भी ले सकते हो. डोमेन वैल्यू माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू that will be 1 minute, that will be definite if the boundary is not included. सिर्फ उस पॉइंट को सिर्फ जो है that is function, is a function, but not for minus pi by 2 plus pi by 2. So 90 के एंगल के बहुत क्लोज भी, मतलब जो आप सोच लो एग्जैक्ट 90 से, मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको मेजर आप जो भी मेजर करोगे उससे बड़ा नंबर. ठीक है, एग्जैक्ट 90 के क्लोज, जो भी क्लोज सोचोगे उससे भी क्लोज आपको 89.99999999 आप यानी 89.99999 कुछ भी ले लो जो कि आपको एग्जैक्टली 90 लग रहा है, तब भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. ओके, बट एट 90 दैट विल बी नॉट एग्जिस्ट. तो सिमिलरली जब कहीं लिमिट अप्लाई करते हैं, वेन एवर यू अप्लाई द लिमिट, ओके, इट डेरिवेटिव में भी एग्जिस्ट बट एग्जैक्ट वैल्यू ना एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि डेरिवेटिव इज अ चेंज इन अ नेबरहुड. जैसे यहां से ये इसका नेबरहुड है, यहां से सिर्फ आपने ये पॉइंट निकाला है, दिस इज इक्वल टू क्या रिलेशनशिप था, सॉरी इसी तरह ही आएगा, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, दिस ओपन ब्रैकेट विल बी माइनस पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू. अगर आप इस पॉइंट को सिर्फ निकाल देते हैं तो इन पॉइंट के अलावा द लिमिट एग्जिस्ट. सो लिमिट एग्जिस्ट, जब भी डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव इज द चेंज इन नेबरहुड, सो डेरिवेटिव में भी एग्जिस्ट. इवन इफ 0/0 फॉर्म में अगर एग्जैक्टली वो अनडिफाइन हो रहा है या इन्फिनिटी हो रहा है, बट उसका डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट में शायद वो पॉसिबल होगा. तो हम इस तरह की लिमिट को सॉल्व करें. तो अब हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द L'Hopital रूल. ये 89 यार, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है. तो क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि वही पॉइंट, यानी माइनस पाई अगर और प्लस पाई सिर्फ ना इंक्लूड करें तो वो डिफाइन होगा. मैं इस ब्रैकेट को, मेरा ख्याल है मेरी लिखाई अच्छी नहीं थी, ये लो अब, हाँ जी डिस्क्रीट. ओके, मेरा ख्याल है अब हम जरा एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ आ जाएंगे. दैट इज द रीजन टू एग्जिस्टेंस ऑफ दिस L'Hopital रूल. ओके, 1 मिनट प्लीज. एक्सरसाइजेस फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन, अभी हम कर रहे हैं 0/0 फॉर्म. इस तरह की फॉर्म को हमने सॉल्व करना हो, व्हाट इज द हाउ वी मे सॉल्व इट इफ देयर इज अ 0/0 फॉर्म. ठीक है, तो साइन x डिवाइडेड बाई x
ये कौन सी फॉर्म है, sin 0 is 0, x 0, ये कौन सी फॉर्म है, नहीं, x approach to 0, that is not undefined. If x is exactly 0, that will be undefined. One minute, please. Yes, you are right. Sin x divided by x, limit x equal to 0, if that is exactly that point, then that will be a 0 divided by 0 and it will be undefined. But if exercise is limit x approach to 0, not equal to 0, approach to 0, I have already explained that if that is pointing is pointer touching to minus pi by 2 plus pi by 2, that may be undefined. But if we exclude only that point, if there is a limit, then that will be not. For example, if I apply that sin x divided by x, this will be a 0 by 0 form. Okay. In that case, I have, according to L'Hopital rule, we may convert it into the derivative. Sin का derivative क्या होता है? Cos x. और x का derivative 1. Okay. Okay. So cos 0 is 1. So I may write as limit cos x approach to 0 1, that is 1 divided by 1. So answer will be a 1. So this, for this the answer will be 1, and for this answer will be undefined. So that is the difference.